Okay, good morning everyone. Welcome to Daily News Analysis by Tathastu ICS. Today we are going to see certain topics that will be reflecting in our UPSC preparation. Okay, so for 15th July 2026, I have handpicked some topics. Again, I'm emphasizing, please do at least skim through the paper. Okay, even if you're not reading between the lines, it is completely fine. क्योंकि अभी यहाँ पर हम बता देंगे आपको, बट बाकी सारा चीज यू हैव टू रीड अबाउट इट. ठीक है, गुड मॉर्निंग दीपेश. सो आज हम ये देख लेते हैं. ठीक है, द SOP फॉर अर्जेंट केसेस, स्टडी इन टर्बुलेंस, and also new political generation, India US defense ties. These are the things that we are going to see today. I'll explain it in a while. ठीक है, good morning सुहासी, good morning शानू, good morning भूषण. ठीक है, चलिए. सो इस टॉपिक्स में ओके, मेजर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू सी इज अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस थोड़ा बहुत. ठीक है, सो इसके अलावा हमारी मेजरली पॉलिटी पेपर में आएंगे GS2, एंड एक दो पार्ट पे हमें क्या मिलेगा, वो GS3 का एक टच मिलेगा. ठीक है, अभी तक क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत तो नहीं है. चलिए, जस्ट अलो मी फॉर अ मिनट, आई जस्ट कम टू माई come with my pen. Okay. Okay, done. So here, what we are going to see today, the first thing is about the SOP for urgent cases. So Supreme Court have given us like standard of operating procedures. Good morning, Bulbul Gupta. Good morning, Vita. And Bharat, good morning. Anmol Ratan, good morning. To a warm good morning to everybody. चलिए, अभी हम टॉपिक्स में चलते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है एक स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जहां पर इट हैव क्लियरली मेंशन्ड ओके अभी ओके देयर द सिटीजन शुड नॉट बी वेटिंग फॉर कोर्ट्स वर्किंग हार्स. Okay, for right now, instead courts will be available for certain limited things, okay, even in their holidays and things. So the first thing is about, like, if there is any threat to your life or your liberty, immediately you can knock the doors of whom? The courts. Okay, so that is what the Supreme Court have said, that we will be seeing that. So it is again comes under our judicial reforms section. Okay, so we are going to see the challenges in that, okay, and how far it is feasible for India to accomplish this. All these things we are going to see today. Okay, clear? So GS2 paper हमारी पॉलिटी है, जुडिशरी रिफॉर्म्स, ये सब कुछ. ठीक है, एंड द सेकेंड थिंग इज अबाउट स्टडी इन टर्बुलेंस. ठीक है, सो यहाँ पर दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट ओके, इवन दो वी आर गोइंग फॉर मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मल्टीपल इश्यूज, ओके, even though there is a lot of issues that were going on around the globe, but still we are going for, India is going for a steady partnership, and along with that we are trying to secure all those things. Okay, so it is about the partnership ties that we are having with like Australia and New Zealand. Okay, so we are just going to see what are all the areas that we are actually focusing upon right now, and along with that we are just going to see what is the future things that we'll be having as a like cooperative nations. ठीक है, so this is again implies in our GS2 paper IR for the international relations, and also you have to keep that in mind, what are all the dimensions that we are having a cooperation also. ठीक है, partnership में कौन सा आएंगे. It is just kind of a revision part for us, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड की टाइप्स पे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पे, और इसके अलावा द टेक्नोलॉजी दैट वी हैव. डू यू हैव अ PDF? अभी थोड़ी देर में आपको प्रगति यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, और इसके अलावा विल बी गेटिंग इट इन द टेलीग्राम चैनल एज वेल. ठीक है, चलिए. सो यहाँ पर स्टडी इन टर्बुलेंस यू विल बी वी आर गोइंग टू सी अबाउट द ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के साथ इंडिया के टाइज और पार्टनरशिप कैसे है. ठीक है, चलिए, keep that in mind. ठीक है, so the third one is about new political generation, जहाँ पर this editorial is talking about how youths are, Indian youths are emerging as a political like being active. It's okay Bhushan, it's not it's completely fine, no worries. ठीक है, cool. चलिए, अभी हम देखने वाले हैं न्यू पॉलिटिकल जनरेशन, जहां पर हमारी इंडियन यूथ्स, earlier they were passively working upon the politics, right? But now we all are actually
actively participating in the politics. So now this editorial is talking about certain things. Okay, ये आप like मोस्टली जीएस वन पेपर में रिलेट कर सकते हैं सोसाइटी में, ठीक है, हाउ इंडियन यूथ्स आर वर्किंग एंड हाउ देयर आइडियाज आर गोइंग ऑन, ठीक है. And then this is current affairs class Oshin, and you will be getting this classes regularly 6 days a week, ठीक है. ये आप मॉर्निंग 10 o'clock you can start watching them, ठीक है. गुड मॉर्निंग नेमी बाबा सर, ठीक है. चलिए, so this paper you can use it, this editorial things you can use it in your GS1 paper where we are talking about the youths, ठीक है. ये क्लियर है. और इसके अलावा इसमें क्या बोला जा रहा है, हाउ द पॉलिटिक्स हैव बीन इवॉल्व्ड ओवर जनरेशन, हाउ द एक्टिवनेस ऑफ द यूथ्स आर गोइंग ऑन right now, ठीक है. So that we are going to see. You can essays में, ठीक है. और इसके अलावा even you can use these ideas in your interviews also, अगर आपको पूछने जा रहे हैं, क्योंकि recent examples अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, जेन जी प्रोटेस्ट हैं और कॉकरोच जनता पार्टी हैं, right. There are like n number of youths are participating in different various areas, right. नेपाल में भी हुआ था, भूटान में भी हुआ था. So these are all the examples. Globally people are being active, the youth, especially youth generation, are being active in the politics. And when it comes to India, we have n number of like examples, ठीक है. Clear? चलिए, the fourth one is about India US defense ties. So यहाँ पर this editorial is talking about, देखो, इंडिया और यूएस के बीच में हमेशा एक रिलेशंस, देयर वोंट बी एनी कट डाउन ऑफ द रिलेशंस, ठीक है, जितना भी वो स्ट्रेन्ड है. ओके, हाउ लॉन्ग इट इज लाइक वेरी पेनफुल टाइज, बट स्टिल इंडिया विल बी ट्राइंग टू कीप इट विद यूएस बिकॉज इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर अस. क्योंकि अगर, गुड मॉर्निंग अभी, अगर, ठीक है, यूएस इज ट्राइंग टू स्ट्रक डाउन एनी कंट्री, इट इज वेरी इजी फॉर देम टू डू इट. सो even with enemy we have to be in a good terms also. So that kind of a relation we are, मतलब we are supposed to keep it, क्योंकि strongest economy है यूएस. और इसके अलावा they have a very great like military equipments, okay, defense equipments, we have multiple ties also. But here what we are going to see, we are going to see like how far, okay, India and US relations when it comes to the defense sector, how it has been working, and what are all the challenges that we are facing, and what can India India should do when it comes to this kind of situations, that we are going to see from this editorial, ठीक है. Clear till now? इसके अलावा एक और चीज है कि यूएस ने एक चीज बता दिया कि नाउ वी आर गोइंग टू गिव द सैंक्शंस, वी आर गोइंग टू इम्पोज द सैंक्शंस ऑन कंट्रीज हु आर गेटिंग द प्रोडक्ट्स डन थ्रू फोर्स लेबर और द चाइल्ड लेबर, ठीक है. हमारी इंडियन आर्टिकल 24 and 23, दे आर एक्सपेशली फॉर अबॉलिशिंग दोस चाइल्ड लेबर एंड द लाइक फोर्स्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर, राइट. सो ये यूएस का एक स्ट्रेटेजिक एक्शन है जहां पर not able to come to the end of a few days. Now I'm on. Okay, Abhi, great. ठीक है. So just get a summary of whichever the days you have missed out. ठीक है. So वो summaries ले लेना. ठीक है. अभी coming back. चलिए. So what is happening? Strategic way के through US have brought its ideas like if इनका मेन कोर आइडिया है अपना इकोनॉमी को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना है, और इसके अलावा दे हैव टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है. सो अपना मार्केट सिक्योर करने के लिए एक और तरीका है सैंक्शंस, ठीक है. सैंक्शंस अगर ज्यादा जा रहे हैं और टैरिफ्स ज्यादा जा रहे हैं तो व्हाट विल बी हैपनिंग इन, मतलब एग्जांपल, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग राइस टू देम, ठीक है. सो वी हैव एन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन यूएस आल्सो, राइट. सो व्हाट दे विल बी डूइंग, फर्स्ट थिंग, our Indian government is giving the subsidies and everything, so they will be having what, चीपर अमाउंट में हम इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, राइट. इन feasible amount we are exporting. So what the US will be doing, US will be actually like most of the people will be getting Indian rice only because it is very feasible and low cost, right. So what is happening, it is affecting the US market, US farmers as well. So to reduce that effectiveness in the internal market, so US will be putting on the tariffs and the sanctions for countries so that their exports will become costlier and their exports will be very minimal to the US.
You're getting my point? So in case, if at all, okay, the commodities are being restricted or being highly priced, people obviously go for the lower prices so that the US economy will be growing. That is the core idea of US. But they are giving the justification, maybe they are giving a polished way to say that we are putting sanctions and we are not encouraging the products that is being exported to US, which is made through forced labor or this what the forced labor or the child labor. Okay, to have the, as I have told you, to have the minimal possible relations with US, a positive relation with the US, India also came forward and India also have said that we are banning the exports to India, which is exports to India by other countries, whether it is made up of if it is made up of those what फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर के थ्रू जो हुआ है, ठीक है. सो हमारी एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पर, यूएस इंडिया का रिलेशन के लिए व्हेन इट कम्स टू द कॉमन कॉज, इंडिया इज रेडी टू गो फॉर दोस like relatively similar kind of approaches. Okay, first thing. And second thing, you have to see, already हमारी Indian constitution में, as I have told you, article 23 and 24, it have talked about the like abolition of the forced labor and also securing child labor from hazard, prohibiting child labor from hazardous industries and everything, right? So that is one thing where hamari Indian constitution and also the international laws kind of cooperating, right? The world organization for labors, okay, ILO, everything will be labor organization. Okay, so there we are compiling with each other, so that gives an edge for us. Why I'm telling you? Because it is okay, there is another article also on the forced labor, please do read about it. And along with that, India US की ties के बारे में भी I wanted to tell you, so that's why. ठीक है, चलिए. Very good, Shanu. That prohibits human trafficking, yes, right? Forced or unpaid labor and other similar forms of exploitation. Good, Shanu. And ma'am, please tell me also, I don't know how much backlog of lectures will be there. How should I complete it? See, Oshin, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो just keep that in mind. आज से ही कर लेना, ठीक है. पिछले जो भी है उसको छोड़ देना, because you have just started. If you sunk into this backlogs, you cannot come back again. It is not that easy, ठीक है. So what is gone, let it go. You can cover it up with monthly compilations or something, but I would tell you, please don't get into the trap of backlogs. From today, be sincere to your preparation. That is more than enough, ठीक है. So बाकी जो छूट के है सिंपल तरीका से मंथली मैगजीन्स के थ्रू कवर कर लेना, ठीक है. एंड शानू, ओके, आर्टिकल 24 एंड 23 के बारे में उन्होंने बता दिया. दिस इज done, it does not have a backlog. Okay, ठीक है. चलिए अभी हम फटाफट टॉपिक्स के अंदर चले जाते हैं. Okay, the Supreme Court weighs SOP for urgent cases affecting life and liberty. As I have told you, हमें ठीक है, recent times में क्या क्या है. ओके, recent times में जुडिशरी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा. When it comes to the challenges or when it comes to the issues with judiciary, lots of pendency cases. Okay, they are going on summer vacations and the holidays are going on. Okay, and we have to extend the benches also because availability of judges are very minimal, and along with that, it is not easily accessible for every person to reach out the courts in a set time, ठीक है. So अगर कोई issue है मेरे पास आ रहा है, मतलब if I am facing any issue related to my fundamental rights, or that is to Supreme Court, okay, or any other issues that I want to go to, like go to the normal courts, high courts or district courts or tribunals, wherever I wanted to go, there is a एक hurdle है जहाँ पर working hours में ही I can approach them. Till then, okay, the state is actually doing one strategic area, one strategic action where states will be doing certain things when the courts are in the leave, so that you cannot approach the court, and once the courts are being activated, till then you will be losing all major of your things will be lost, ठीक है. So this is a major thing, major issue that have brought into the consideration, and that's how this SOP have been drawn, ठीक है. So Supreme Court के पास एक पेटिशन हुआ था, सो वहां पर उन्होंने बताया स्टेट का आर्बिट्री एक्शंस, एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर बीइंग वेरी like particularly it is on the
like purposefully, deliberately they are doing when the courts are in leave. So for that, this SOP is telling that to reduce the response time of the courts. Okay, abhi 24/7 courts will be available for you for certain things which is that is affecting your fundamental rights, which is to your life and liberty. Okay, so these are the two things. For that, the courts will be completely open, be it Supreme Court, High Court or the district courts, whatever the court is. ठीक है, so इसके लिए एक procedure है SOP में. कौन they have explained it, like who will be filtering all those, who will be collecting all those and registering all those compliance. Okay, first thing. And second thing, to whom that have to be distributed, they will be seeing the availability of the judges, they will be seeing the availability of advocates also. ठीक है, and इसके अलावा they will be ensuring, okay, the SOP is giving the time period of like within 1 hour the court has to resolve it. ठीक है, so this is one thing. Practically expecting things, it is little challenging, but still if people mindset go for it, we can do it. ठीक है, so यही है. so 1 घंटे के अंदर आपका problems resolve होना चाहिए. So if this process have been given, n number of compliances will be coming, right, complaints and everything will be coming. so उसको filter करेंगे, priority basis में करेंगे, and priority basis में that will be given to life and liberty का कोई भी दिक्कत आ रहा है, then they will be taking the action. ठीक है, गुड मॉर्निंग अमीर. ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक है ना, क्लियर है. ठीक है, सो किस किस चीज में, ओके, व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट एक्चुअली स्टेट यूज इट्स पावर व्हेन things are going on, when Supreme Court is or any court has been in the leave. First thing, प्लीज कीप दैट इन माइंड, साइड बाय साइड नोट्स बना के लेके आना. SOP में इन्होंने ऐसा बताया, कोर्ट्स विल बी अवेलेबल फॉर लाइफ एंड लिबर्टी. ओके, ओके, लाइफ एंड लिबर्टी में अगर स्टेट, ओके, if there is if you have been or if anybody have been illegally arrested, ठीक है, unless until you did anything, but illegally you have been arrested, like in the evenings or when the courts are being weekends में ज़्यादा से ज़्यादा police stations में और in the law and order maintenance में क्या होगा. so if there is arrest, to prohibit their reaching out to the courts very soon, arrest are happening in the weekends. so उसके लिए है. ठीक है, so क्या होगा, फर्स्ट थिंग इलीगल अरेस्ट. ओके, और इलीगल अरेस्ट के साथ, okay, if there is any demolitions of your houses, ठीक है, early mornings those demolitions will be for municipalities or for corporation expansion of roads or something, or if there is any clearance program or going on. so people, if the people are protesting, what they will be doing, people will be like those houses will be completely demolished when in the early mornings they cannot go to either police station or to the courts. ठीक है, so ये एक चीज है demolition, डेमोलिशन ऑफ हाउसेस. और इसके अलावा इलीगल डिटेंशन, आप कुछ गलत नहीं किए फिर भी सस्पेक्शन में आपको डिटेंशन में लेके गए हैं इन लोगों ने. ठीक है, सो इलीगल डिटेंशंस. and along with that, if there is anything, okay, that have been forcefully, okay, deliberately, if they are going for if you have been shifted to any other country, okay, and all those things, for that the court will be available for you 24/7. you can immediately reach to them either through digital platform. okay, वो वहाँ पर भी एक challenge है, digital infrastructure and technology logistics things have to be make ensured. पहले ये practicality के पहले आने के पहले we have to ensure all those logistics, availability of the personals, like filter in the process who was getting the registers, okay, and along with that advocates and judicial benches, इनका availability भी हमें देखना पड़ेगा, और logistics and digital infrastructure भी ready रहना पड़ेगा. ठीक है, so that is the one thing that we have to keep it in mind. ठीक है, so यहाँ पर इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि
So you can knock the knock the doors on the courts anytime, day or night. यहाँ पर ये ensure कर रहे हैं, you don't want to wait unless and until the court is coming, unless and until the court is coming into this working hours. ठीक है, इनके बदल इसके बदल क्या हो गया, courts will be available for you when it comes to very serious things. ये citizens के लिए, normal citizens के लिए अभी available करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, but for extraordinary people, for some politicians or for any other things, it is actually happening. So the same model, but that is not written anywhere, or it is not constitutionally approved anywhere, but it was happening. So the same thing now it is available for the normal citizens when it comes to, is there is any to protect the fundamental rights, and along with that life and liberty का कोई भी provisions है उसको protect करने के लिए now it have been came to India through SOPs. ठीक है, so what are all the things that you can go for the courts, irrespective of day or night or holidays or weekends, जो भी है, किस किस चीज के लिए आप जा सकते हैं. पहले चीज, any case affecting life and liberty including illegal detentions, and also it depends upon that Bhushan. Sometimes ऐसे है कि we have to go for world current affairs also to relate with what is happening around us, क्योंकि international relations is also part of our syllabus. As for that, so India में जो जो हो रहा है, कभी कभी वर्ल्ड में भी जो भी हो रहा है उसको भी हमें थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा. ठीक है ना जी, चलिए ठीक है. So the imminent demolition of homes which I have told you, for expansion और municipalities में कोई भी वो clearance program है उस time पे वो demolitions हो जाते हैं. और deportations where you will be shifted to any other country, you will be losing your your citizenship and everything. So that is for the deportation. Custodial violence or any other state actions which will be affecting your life and liberty, for these things you can go for approaching the courts. Okay, so this is a major thing that we have to see. So the core concept is here: the absence of a structured and institutionalized mechanism ensuring continuous judicial accessibility may result in irreversible consequences. So यहाँ पर इन लोगों ने क्या बोल रहे हैं? First thing, if you are waiting for the courts to come into their working hours, till then irreversible damages would have been happened to either to a life, or to a person or to any property. ठीक है, so इसके बदल हम क्या करने वाले हैं? Serious issues में the courts will be available for us. ठीक है, that is what they are telling here. So इसके लिए they will be filtering it out. Challenges, again I'm telling you, the thing is like, it is a very good initiative, practically it will be possible also, but यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसका availabilities check करना पड़ेगा, which I have talked about the digital infrastructure and also the personal's availability, and इसके अलावा digitally how people are being aware. ठीक है, how they can go for it. ठीक है, unless अगर एक और चीज है, if I'm not able to reach out to the courts immediately, at least through digital or Zoom meetings may or any other digital meetings ke through, I have to get it cleared, right? So every nook and corner of the world have to be every nook and corner of the India should be having that particular facility. ठीक है, ये याद रख लीजिए. और इसके अलावा expansion of benches should be there. ठीक है, क्योंकि already we have seen high courts में इतना सारा vacancies हैं, it to be filled and everything. vacancies को हमें भरना है, and also at times retired judges को भी हम use कर सकते हैं, and also we can set up the regional benches of Supreme Court in every other area so that it will be easily accessible to people, citizens. ठीक है, so these are the reforms that recently we are talking about that is being related to this. ठीक है, good morning Rahul. So these are the things that we have to focus. चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, स्टडी इन टर्बुलेंस. सो इंडिया मस्ट बिल्ड पार्टनरशिप इन दिस एज ऑफ ग्लोबल टर्मोइल. यहाँ पर ग्लोबल टर्मोइल के बारे में क्या क्या बात कर रहे हैं? फर्स्ट थिंग, ओके, चाइना इज बीइंग टू एक्टिव, राइट? China's activeness, see,
चाइना की एक्टिवनेस इसलिए प्रॉब्लम है, इट वांट्स टू डोमिनेट एंड इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू like dump other countries. ठीक है, so that is what the major thing. ठीक है, and the second thing is about, we know Russia Ukraine war. Okay, and along with that US and Israel all together attacking Iran. राइट, यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी का दिक्कत भी आए थे, हमें बहुत सारे बार हमने पढ़ लिया, बट जस्ट रिविजन. ठीक है, और इसके अलावा वन ऑफ द मेजर थिंग दैट वी ऑल आर फेसिंग इज द क्लाइमेट चेंज. ठीक है, हमेशा याद रख लेना ग्लोबल डिस्टर्बेंसेस में यू हैव टू कीप दैट इन माइंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू थिंक अबाउट द क्लाइमेट चेंज एज वेल. सो ये भी हमें यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा. ठीक है, ओके, क्लाइमेट चेंज. सो जो भी वो क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, द टेम्परेचर इज बीन राइजिंग, द icebergs are melting, the water level is keep on increasing, we are going beneath the water. All these things we have to keep that in mind when it comes to international issues. ठीक है, so in this case what we are going to see, this editorial is talking about two different ties with India. ठीक है, one is India Australia. Okay, and along with that India New Zealand. ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया न्यूजीलैंड की टाइज के एक कॉमन फैक्टर है, विच इज वी आर हैविंग पीपल टू पीपल कनेक्शन. डायस्पोरा, एजुकेशन के लिए जाते हैं हम, ऑक्यूपेशंस के लिए जाते हैं, एंड इवन वी हैव मल्टीपल डिफरेंट like different people to people connections when it comes to New Zealand and Australia. Cricket, okay, so all these things are very like one thing that is India, Australia and New Zealand in common, we have the connections, right? So now अगर आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे तो now from okay strategic partnership से people to people connectivity से हम कहाँ गए, comprehensive strategic partnership, right? So यहाँ पर हम पहुंच गए. So it is a very good initiative जहाँ पर because India and Australia we both are having certain things that is being very considerate, which is about China's rice. Okay, so first thing is about China's rice, and also okay other thing, energy security, that we have faced an issue because of the blockade of Strait of Hormuz. ऑस्ट्रेलिया भी है, इंडिया भी है, हम दोनों क्या हो गया, ठीक, चलिए, ठीक है. सो चाइना एंड एनर्जी सिक्योरिटी, और इसके अलावा हमारे पास सप्लाई चेन का भी दिक्कत आ रहे हैं, राइट? सो ये सारा चीज हमें याद रखना पड़ेगा. दीज आर द कॉमन थिंग्स दैट वी आर गोइंग एज अ चैलेंज, ठीक है, फॉर ग्रोइंग फॉर टू कंट्रीज, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो. So now what we have did is, okay, so now the thing that we have did is like India and Australia will be having certain cooperations, ठीक है, just like to have a peaceful and open Indo-Pacific region, okay, and also to have a check on, and also have a like a military cooperation, defense cooperation, and also the navigation integration, and also imaging, information sharing, all these things we are going to have with Australia. Just we will be going to see that. ठीक है, this editorial is talking about, it have listed down कहाँ कहाँ पर India and Australia is going with the ties and कहाँ कहाँ New Zealand is going with the ties. That is what we are going to see from this article. Clear till now? So these are the issues that we are facing, and for that what we are going to going for the solution. First thing, in free and open, right, Indo-Pacific region हमें चाहिए. So यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? First thing, for free and open Indo-Pacific region, what we are going to have? The first thing, it will be of okay maritime security. So maritime security में अगर हम बात कर रहे हैं तो annually we will be having like the defense ministries of India and also Australia, they will be having annual meetings, ठीक है. So maritime security में ये है, they will be going for joint exercises which is about the military cooperation, and along with that what we will be having quad countries too. Yes Shanu, you're right, India, Australia, Japan and US और the quad countries. India and Australia quad countries में भी है, और इसके अलावा अभी तक
ठीक है, यूएस का आइडियोलॉजीज डिफरेंट है, बट स्टिल हमारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आइडियोलॉजीज एंड द इश्यूज दैट वी आर फेसिंग और कॉमन. ठीक है, क्लियर शानू? वेरी गुड. ठीक है, सो मैरिटाइम सिक्योरिटी और मिलिट्री कोऑपरेशन हम जाने वाले हैं, राइट? मिलिट्री कोऑपरेशन में क्या है? वी विल बी गोइंग फॉर इंटरऑपरेबिलिटी. ठीक है, सो ये भी चीज है जहां पर हमारी मिलिट्री एंड नेवल पर्सनल्स एंड ऑस्ट्रेलिया's पर्सनल्स विल बी हैविंग joint exercises, and we will be sharing the technologies, and also we will be sharing the defense equipments as well. So naval, मैं अलग से लिख देती हूँ, ठीक है, naval and also we will be having military cooperation with joint exercises. Okay, and many more things are going on. ठीक है, so ये पहले चीज है. So अभी when it comes to the next one, energy security, Strait of Hormuz ने थोड़ा सा बंद कर लिया, right? So that is again, now also the Strait of Hormuz have been closed, so we will be foreseeing some like energy security threats again. So what we are going to do is here, instead of like going for one particular country, we are focusing upon diversification of our resources for energy, first thing. And the second thing, it will be of, we are moving towards cleaner energy technology. So Australia will be helping us, okay, Australia will be helping us with the cleaner technologies, and along with that we will be having two special things. One is, okay, critical minerals, where India right now moving towards the cleaner energy and trying to focus upon the EV vehicles and also the infrastructure that is being needed for those EV vehicles, right? Two wheelers bhi hai, four wheelers bhi hai, and heavy trucks also we are focusing upon this electrical vehicles, right? So वहाँ पर हमने, प्लीज रिकॉल ऑल दोज एडिटोरियल्स दैट वी हैव रेड. ठीक है, वहां पर चैलेंजेस क्या था, हमारे पास क्रिटिकल मिनरल्स है नहीं, एंड वी वेर लाइक इट इज वेरी important, necessary for India, but still we are not getting it. The problem, because everybody wanted that, but we are going with the ties with Australia because they are very good relations with India, and they will be giving us the critical minerals also, like nickel, cobalt and everything, so that we can use it in our like EV vehicles. ठीक है, यहाँ पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर और ईवी का व्हीकल्स के लिए क्रिटिकल मिनरल्स तो मिल जाता है. एक चैलेंजेस ये क्या है, हमारी जो भी है, द मेजर थिंग इज लाइक पिच ब्लैक के बारे में हमने तो पढ़ा है, और मलाबार के भी बारे में पढ़ा है. वेरी गुड शानू, दैट्स ग्रेट. ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सो क्रिटिकल मिनरल्स हमें मिल जाएंगे, हम सब कुछ प्रोसेस करेंगे, बट the waste management, right, the e-waste management, all these things that we have to keep that in mind. ठीक है, so that also we will be learning from Australia. This one, the technology also will be there. Yes, obviously, Rahul. Rahul, please keep that in mind. Ki it is very necessary for you to get a job, right? So any human being, not only for you, for any human being, having a job and having financial stability and also financial independence is very much needed. So as of now, it is also not a wrong thing, right? So एक बार exam तो दे दो, you will get at least the confidence in you, right? So उनका preparation level कैसे है आपका, आपका how you are able to perform, all these things you can see. So just give, don't see about like what level of exam it is. Please go for all the government exams, how much ever you can write it. You will get knowledge about it and you will be getting practice to those environment. ठीक है, you utilize those resources. ठीक है, फिर इसके बाद आप यूपीएससी के लिए भी साथ साथ प्रिपेयर करते रहना. ठीक है, that will give you an edge. Okay, if you like keep on giving the test, mock test, और जैसे एग्जाम्स दे रहेंगे तो it will be definitely giving you edge in UPSC preparation. So please don't skip any exams. ठीक है, चलिए. ओके, सो नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्रिटिकल मिनरल्स का वेस्ट मैनेजमेंट का ये है, वो भी हम उनसे सीख लेंगे. और इसके अलावा दे आर प्रोवाइडिंग, दे आर exporting, okay, they are exporting the
uranium that is needed for the nuclear reactors when it comes to the civilian purpose, which is electricity produce or any other thing, especially for civilian purposes, they are exporting it to us. So uranium bhi hame mil jayenge, so we would be able to go for much more efficient, cleaner energy and sustainable energy. ठीक है? Okay Rahul, great, all the best. ठीक है? So ये हमें याद रखना पड़ेगा. So these are the things majorly that we are going for the cooperation. चलिए अब एक एक बार देख लेते हैं. Okay, so I hope it is visible for everybody. India's efforts to consolidate partnerships across the Indo-Pacific. India's relations with both countries have traditionally been largely economic and people-centric, which I have told you, people-to-people connectivity. Okay, but the visits underscored an increased emphasis on strategic aspects. Okay, geopolitical competition manifested in supply chain disruptions and the realignment of global economic networks, which we have talked about, like different connections that the global countries were happening. चलिए अभी इसको छोड़ देना, प्लीज कम बैक टू द थिंग्स. ठीक है, याद रख लीजिए. ठीक है, so now what we are going to see. ठीक है, the visit reflected New Delhi's attempt to strengthen the southern arc of the Indo-Pacific under its Act East policy and also mutual and holistic advancement for security and growth across regions. ये हमारी एक इंडिया की विजन है. ठीक है, महासागर. ठीक है, एंड इसके अलावा एंड कमिटमेंट टू अ फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन. इंक्लूसिव, फ्री एंड ओपन तो हमने बता दिया. ठीक है, सो देयर विल बी सिक्योरिटी थ्रू आउट द ट्रेड दैट इज बीन हैपनिंग, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस नहीं होना चाहिए. ठीक है, और इसके अलावा क्या क्या चीज हम याद रखना पड़ेगा. फ्री एंड ओपन में ओके, ट्रेड विल बी प्रोटेक्टेड and also shipments also will be protected, and along with that what are all the things that we have to keep that in mind. First thing, when it comes to the navigation, okay, or the fuels and the logistics sharing. Okay, when our naval vessels or their naval vessels are going on, so at that time logistic sharings also will be there, right? Maritime security. So here in this case, so if any vessel or any ship or any boat that have been attacked by any other country of India, Australia will be coming for the rescue. The same goes with Indian side as well. Okay, vice versa, we are going to secure those things. Okay, so these are things we are going to see when it comes to the open and free Indian Ocean, sorry, Indo-Pacific region. ठीक है, so and also inclusive Indo-Pacific, जहाँ पर छोटी छोटी countries भी, those who have surrounded around Indo-Pacific and those who have having the common borders, shared waters. ठीक है, so वहाँ पर भी इनको हम इंक्लूड कर देंगे. ठीक है, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया अडॉप्टेड अ न्यू जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन. ओके, सिग्निफिकेंटली अपग्रेडिंग द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी फ्रेमवर्क. सो ओके, चलिए, सो डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के बारे में हम बात किया. They agree to enhance interoperability, which I have told you, between their armed forces, expand military exercises, joint military exercises will be happening, and also they will be sharing the knowledge also. ठीक है, establish an annual defense ministers dialogue, which I have told you. Okay, and along with that strengthen cooperation in cyber security, maritime security and emerging technologies. Emerging technologies हमारी क्या है, AI है. ठीक है, और सारा चीज को we are just going for the cooperation. ठीक है, साइबर सिक्योरिटी याद रख लेना, डीप फेक्स और एनी अदर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू, उसका आइडेंटिफिकेशन और मेनी अदर थिंग्स को हम क्या करने वाले हैं, याद रखने वाले. ठीक है, सो इसके अलावा व्हाट विल बी हैपनिंग, collaboration roadmap were unveiled to deepen information sharing, my bad, and operational coordination. So information sharing के बारे में हमने क्या किया, image sharing. So इंडो पैसिफिक रीजन का सैटेलाइट इमेजिंग और डोमाइन अवेयरनेस. ओके, और इसके अलावा द रिसोर्सेस अवेयरनेस, रिसर्चेस, एवरीथिंग विल बी गोइंग अंडर दिस ओनली. ठीक है, so this is the major thing, deepen information sharing and operational coordination in the Indo-Pacific. ठीक है, an immediate and consequential outcome was Australia's decision to allow uranium exports
for India's civilian nuclear program, ठीक है, removing and lingering obstacle in ties and boosting India's clean energy ambitions. Both countries will also find new avenues of cooperation on critical minerals and specific field of global uncertainty. All these things we have covered, right? So अभी चलते हैं हम हमारी न्यूजीलैंड के बारे में, ठीक है। सो न्यूजीलैंड के बारे में हमें क्या है, इंडिया न्यूजीलैंड का डायस्पोरा है, ठीक है, एंड ऑल्सो क्रिकेट के बारे में भी हमारी कनेक्शंस हैं, और इसके अलावा वी हैव वेरी फॉर्मल लाइक रिलेशन विथ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के साथ अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट के अलावा एवरीथिंग इज फॉर्मल एंड एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू द ट्रेड एंड द थिंग्स, ठीक है। नाउ वी आर एक्सटेंडिंग आवर रिलेशंस आउट ऑफ व्हाट, we are extending our relations out of this like economic terms only, instead we are going for a strategic partnership, ठीक है। so यहाँ पर हमें क्या क्या मिलने वाले हैं, the same thing, naval maritime security है first thing, ठीक है। okay, defense cooperation, और इसके अलावा we are going for the naval expansions and things, ठीक है। so these are the things where we are actually focusing upon. so फटाफट इसको देख लेते हैं, और now a formal strategic partnership with a roadmap for cooperation over the next 4 years. so अगले 4 years के लिए हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई चेन का देखते हैं, ठीक है, और इसके अलावा like we are going for the maritime security and the free and open Indo-Pacific region. This is the major thing, ठीक है। so key agreements announced by the countries include maritime cooperation in the Indo-Pacific and mutual logistics supports between the Indian Navy and the New Zealand Defence Force, जहाँ पर logistics which I have told you like the fuel or any other equipments, okay, hull station, and उस time तो वो food and everything, so this logistic supply will be happening, ठीक है। and along with that both sides agree to aim for the substantial expansion of bilateral trade by 2030, okay, 2030 में हमारी bilateral ये हो जाएंगे bilateral agreements, और इसके अलावा हमारी agriculture भी we are going to have ties for this. so first thing agriculture का क्या है, so हमारी dairy, okay, and also many other like farming activities, okay, and mechanism of farming things, all these things that we are going to get from New Zealand, ठीक है। so उसका भी dialogues चल रहा है, ठीक है। so India shares with agriculture cooperation और also be being explored, ठीक है, अभी बात चल रहा है, ठीक है। India shares with Australia and New Zealand a concern about maintaining stability and predictability in the Indo-Pacific region, supply chain diversification, energy security. Please do make note of all these things where we are going for it, ठीक है। supply chain diversification which I have told you, energy security and access to critical minerals and emerging technology are key priorities for India, ठीक है। so अभी strategic autonomy protect करने के लिए we are going for the reliable partners which with whom we can go for this these kind of energies and also the technology sharing, and along with that we would be able to keep the strategic autonomy. US और US के बारे में एक बड़ा इशू ये है कि they will in case of any technology sharing they will not be completely sharing all the technology, there will be limited access to those technology, ठीक है। and the extended version हमें नहीं मिलेगा, it will be completely of what, the limited access only. so यहाँ पर the strategic and also the like predictability के साथ साथ reliability के साथ भी हम जा रहे हैं, ठीक है। so these are the things that we have to keep it in mind. please do read about it. if you have any doubt please let me know. that's it with this editorial, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं फटाफट। ये बहुत छोटा सा ही एक आर्टिकल है, इसमें एक बार रीड कर लेना। they have given n number of examples and everything. the core crux of this editorial is about first thing, ठीक है, पहले यूथ वेयर, ओके, कैसे रहा, passively they were participating in the
पॉलिटिक्स, राइट? सो बट अभी यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होने लग गया, ठीक है? एग्जाम्पल्स, तमिलनाडु में जल्लीकट प्रोटेस्ट हुआ था, उस टाइम भी वो लाइक इट इज अ मेजर कॉज, ठीक है? दैट प्रोटेस्ट इज समथिंग विच वाज अ टर्निंग पॉइंट फॉर सर्टेन थिंग्स, ठीक है? वो जल्लीकट्टू प्रोटेस्ट, एंड ऑल्सो अभी तमिलनाडु की न्यू चीफ मिनिस्टर मिस्टर जोसेफ विजय, राइट? उनका भी उनका जीतने का वो एक सीक्रेट है, मतलब नॉट सीक्रेट, वन ऑफ द स्ट्रेंथ है ये, यूथ्स आर बीइंग पार्टिसिपेटेड इन द एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन पॉलिटिक्स, ये चीज है, ठीक है? और इसके अलावा भी मेनी अदर थिंग, जैसे आई हैव टोल्ड यू, नेपाल में, बर्मा में, सो एवरीवेयर इट इज लाइक द यूथ्स आर बीइंग एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। सो यहाँ पर एक कंसर्न है दैट, पहले तो हमने बोल दिया कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, यूथ्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। सो उस टाइम से अगर आप देखेंगे तो द पॉलिसी मेकर्स एंड ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव्स, ऑल दीज पीपल आर मेजरली इन द एल्डरली पीपल, राइट? सो जहाँ पर क्या है, इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी हैं, दे हैव in number of knowledges, we are not denying it, but the evolvement, okay, the evolvement of the Indian politics and also the generation have to ensure that inclusivity of youth also in the democratic procedures and also the politics, ये हमारी main core concern of this editorial, ठीक है? सो अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगे लोग, सो व्हाट वी हैव टू डू इज लाइक, अगर इनको हम थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी देना पड़ेगा, लीडरशिप रोल्स भी हमें यूथ्स को देना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज इफ यू सी द मीडियम, ओके, देन एंड नाउ आप रख लेना, ठीक है? पहले कैसे रहा पॉलिटिक्स, अगर ओके, पॉलिटिक्स अगर ऐसा है तो सो एक देन रख लेते हैं और नाउ रख लेते हैं, ठीक है? देन में क्या होगा, मेजरली यूथ वोंट बी पार्टिसिपेटिंग। सो ओजर, आई एम गुड बेटा, थैंक यू, एंड हाउ आर यू? ठीक है? सो देन में क्या है, elderly people will be actively participating, अभी youth also are coming right now, right? So वहाँ पर अगर if there is any medium of instructions or any medium of communication, televisions होगा, newspapers होगा, right? And along with that, certain areas where it will be delayed information have been shared, but now everything in finger tips, right? So तुरंत ट्विटर में रीट्वीट करते थे इन लोगों ने, राइट? और इसके अलावा मीम्स क्रिएट करते हैं। सो दीज आर थिंग्स लाइक डिजिटली द इवॉल्वमेंट हैव बीन डन, ओके, द डिजिटल इन्फ्लुएंस एंड ऑल्सो द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर that have been evolved in India. So these are the things that have to be get into the inclusivity, ठीक है? ये याद रख लेना। So it is not only about the youth, it is also about the technology and the medium of sharing the informations. अभी transparency, accountability and also the credibility also having a these youths are emphasizing on all these things, ठीक है? So यहाँ पर एक चीज है, they are emphasizing on this, but the challenge here is about deep fakes, the hated speeches, क्योंकि अगर आप एल्डरली पीपल के बारे में देखेंगे तो दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जितना भी वो बुरा है बट दे विल बी सेड इट इन अ पॉलिश्ड वे, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड थिंग, द एक्सपीरियंसेस दे हैव एंड द नॉलेज दे हैव गेन, that is irreplaceable, but for that we should not be denying the opportunities for the youths, instead we have to give them the inclusive leader roles. So along with the elderly people, youth also should be working together in the leader roles, so that they will also getting the the sharing of नॉलेज विल बी बोथ द साइड्स, इनका एक्सपीरियंस, एल्डरली पीपल का एक्सपीरियंस एंड नॉलेज यूथ के पास जाएगा, और यूथ का जो भी वो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी सब कुछ है, इन लोगों भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वी कैन नॉट कंप्लीटली डिनाई वन जनरेशन इन लाइक एंड यू कैन नॉट लाइक बाय डिनाइंग वन जनरेशन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी ग्रोथ, ठीक है? बी इट एल्डरली पीपल और बी इट यूथ, यहाँ पर दोनों का कोऑपरेशन तो होना ही चाहिए, ठीक है? ये याद रख लेना। सो वहाँ पर मीडियम चेंज है, और यहाँ पर चैलेंजेस क्या क्या है, डीप फेक्स, ओके, फालतू की हेटेड स्पीच है, और इसके अलावा लाइक इन्फ्लुएंसिंग, रॉन्गली इन्फ्लुएंसिंग वीडियोस, ओके, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन। अगर वो हो रहे हैं एंड इंक्लूसिवली elderly people and the youths are going for the politics, it will be bringing a huge difference in our democracy, ठीक है? So it is, that is what they have talked about completely. So they have given those what examples that is happening in India,
ठीक है, where we are talking about the cockroach जनता party, okay, and along with that we are talking about this Tamil Nadu's new chief minister and also Kerala's chief minister. He have been like for by Gen Z's he have been called by Pokey CM, ठीक है. So all these things are like somewhere people needed changes, ठीक है, first thing. And second thing, they need new form of like government, and they need new form of like all those procedures have to be done. So these are the major things that we have to focus, ठीक है. एक बार पढ़ लेना. And they have given like Sri Lankan example also, Southeast Asian example भी इन्होंने दे दिया है. एक बार तो थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है. So बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं. It is about like we have to give the leadership roles to youth also inclusively. We have to work. It is not about, this editorial is particularly not talking about anything हमें उनको elderly people को sideline करना, ऐसा कोई भी, there is no such statement, ठीक है. It is about giving the opportunity for youth also, ठीक है. So that is what the major thing that we have to think, ठीक है. So the medium and also the leadership roles and also evolving challenges along with the evolving technologies, these are the things that we have to focus from this editorial, ठीक है. चलिए, समझ आ रहा है. आई एम नॉट रीडिंग इट फॉर यू बिकॉज यहाँ पर यू हैव टू रीड इट, ठीक है. सो ज़्यादा सा एक आउटलाइन मैंने बता दिया इसका, एक बार आप रीड कर लेना, बस उतना ही है. करंट प्रोग्रेस ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया, length. ओके, इंडिया यूएस डिफेंस टेक टाइज, बिग एम्बिशंस, लिटिल डिलीवरी. यहाँ पर आपको समझ आ रहे हैं बड़ा बड़ा एम्बिशंस है कि इंडिया के साथ बहुत अच्छा सा हमें ये करना है कि व्हाट वी हैव टू डू. इंडिया के साथ वी आर गोइंग फॉर डिफेंस टाइज, मल्टीपल टाइज, पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स. हाउ कैन आई हेल्प द आंसर्स, प्लीज हेल्प मी. एक बार वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दीजिए, वी विल हेल्प यू ऑन दैट, ठीक है बेटा. चलिए, सो यहाँ पर okay, so United States Defense Corporation has acquired an unenviable reputation in strategic circles. यहाँ पर कुछ नहीं है. This editorial is basically talking about, अगर हम यूएस से कोई भी फाइटर जेट्स और कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट्स और एनी अदर डिफेंस इक्विपमेंट्स हम ले रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा इशू क्या आ रहा है, वी आर नॉट गेटिंग द फुल फ्लेज टेक्नोलॉजी, कंप्लीट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं आ रहे हैं, ठीक है. सो ये इधर दे विल बी हैविंग द लिमिटेड वो बेसिक एक्सेस के साथ हमें हमारे पास वो दे देते हैं टेक्नोलॉजी, विच इज नॉट द रियल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इट इज नॉट अ रियल शेयरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी. एक्सपोर्ट्स का मतलब क्या है, आई एम पेइंग फॉर द टेक्नोलॉजी, राइट. सो इम्पोर्ट्स का मतलब क्या है, आई एम पेइंग फॉर द टेक्नोलॉजी एंड यू हैव टू गिव मी द टेक्नोलॉजी. बट हियर यहाँ पर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी इज बीइंग like minimally shared, okay, extended version or the advanced version is not been given to any countries, rather than it is kept by US only. so उसमें क्या ये जाएगा, अगर इंडिया का और पाकिस्तान का दिक्कत आ रहा है, वॉर आ रहा है, तो यूएस विल बी गिविंग दोज एडवांस्ड इक्विपमेंट्स टू हुम, पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और यूएस का रिलेशंस अच्छा है. दे आर like terrorism में they were having the ties and everything, ठीक है. so that is why, so that advanced equipments वो भी पाकिस्तान को भी नहीं देते. इन लोगों ने क्या करते हैं, इंडिया को अटैक करने के लिए, अगर इफ वी आर हैविंग रिटेलिएटिंग टू पाकिस्तान एक्ट, ओके, यूएस विल बी कमिंग, इन केस इफ यूएस इज कमिंग एंड अटैकिंग इंडिया, हमारे पास भी सेम फाइटर क्राफ्ट होगा, उनके पास भी सेम फाइटर क्राफ्ट होगा, बट द थिंग इज दे विल बी हैविंग द एडवांस टेक्नोलॉजी, दे विल बी रिटेलिएटिंग अस विद अ मच हायर टेक्नोलॉजी. इतने पैसा हम देने के बाद भी हमारी लिमिटेड टेक्नोलॉजी ही मिलता है. दिस इज अ मेजर कंसर्न दैट आई एम ट्राइंग टू पुट फॉर इट फॉर यू, ठीक है. तो ये एडिटोरियल भी वही बात कर रहे हैं, जितने वी हैव गॉन फॉर इतना सारा टाइज है, ठीक है. सो इंटरनेशनल ट्रेड I'll tell you, okay, इंडेक्स एस हैं और ICET हैं, DTDI हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, ऑल दिस कॉपरेशन, ऑल दिस विजन्स आर लाइक जेन्यून, ठीक है, कोई बात नहीं. बट द थिंग इज लाइक इनका आउटकम भी जेन्यून होना चाहिए. जस्ट बिकॉज फॉर नेम सेक और आई वॉश यू कैन नॉट यूज दोस technologies or the ties or the associations. Instead you have to give the genuine technology transfer. This is what the crux of this editorial is about, transferring genuine technology,
ठीक है, दिस इज व्हाट द मेजर थिंग। चलिए हम अभी देख लेते हैं यूएसए हमने क्या क्या इंपोर्ट किया है when it comes to defense technology. Over the past 2 decades, successive administrations in New Delhi and Washington have unveiled defense technology partnerships and industrial collaborations promising to transform bilateral sorry partnerships and industrial collaborations promising to transform bilateral military ties, only for them to become bogged down in protracted negotiations, export control restrictions, technology transfer disputes and differing commercial expectations. So यहाँ पर हम क्या क्या करने वाले हैं, इसको डिकोड करने वाले हैं। पहले चीज प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशन, सो मेजरली ऑफ यूएस प्रो नेगोशिएशन से होता है, हमारी साइड से थोड़ा सा कम, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यहाँ पर थोड़ा सा सबसाइडेड हो जाता है, ठीक है, पहले चीज। और सेकेंड थिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल। एक्सपोर्ट कंट्रोल में ये प्रॉब्लम है विच आई हैव टोल्ड यू, द टेक्नोलॉजी इज नॉट कम्प्लीटली शेयर्ड, इट इज अबाउट जो भी वो टेक्नोलॉजी यूएस एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाकी जहाँ पर, वहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी इज नॉट they are not sharing full TOT. Yes beta, yes Bhushan, you're right, ठीक है, so that is what we are talking about. So complete technology और the advanced technology हमारे पास नहीं है, the limited and the minimal controlled technology इन लोगों ने यहाँ पर दे रहे हैं, keep that in mind. And टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिस्प्यूट्स, यहाँ पर क्या हो रहे हैं एट पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट लाइक अगर हमें कुछ फाइटर जेट्स चाहिए और इफ वी आर नीडिंग ऑफ एनीथिंग लाइक विच इज हाईली नीडेड, ओके, उस टाइम तो क्या बोलते हैं, दे विल बी लाइक पुटिंग ऑन द सैंक्शंस एंड दे विल बी neglecting those transfer of export of those aircrafts because to keep that exclusive to US and also to keep that to emerge or to influence people with like एक्चुअली डिमांड क्रिएट करना, ठीक है, उनको डिमांड तो क्रिएट करना है, उसके लिए ऑल दीज एक्सपोर्ट कंट्रोल रेस्ट्रिक्शंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर डिस्प्यूट्स आर कीप ऑन गोइंग ऑन, ठीक है। सो अगर मैं रशिया के साथ मेरे पास बहुत अच्छा रिलेशन है, सो उस टाइम क्या होगा, बिकॉज यूएस एंड रशिया यू नो दे बोथ आर इन ऑपोजिट पोल्स, राइट। सो अगर यूएसए में डिफेंस टेक्नोलॉजीज खरीद रही हूँ और यूएस के रशिया के साथ मेरा टाइज भी अच्छा है, रिलेशनशिप भी अच्छा है, उस टाइम तो क्या करेगा, they will not be giving the proper technology, instead they will be denying it. either आप उनसे रशिया से जो भी आपका रिलेशन है इसको कट डाउन करना, okay, then only I'll be releasing all these things. So these are the things that US is actually going with it. So whenever you're buying, whenever any country is buying any defense technology or any technology, पहले जेन्यून एंड रिलायबल पार्टनर्स तो होना चाहिए, वहां पर दोनों का नेगोशिएशंस इक्वली होना चाहिए एंड इट शुड बी लाइक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी देयर, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द 3 थिंग्स दैट इज एम्फसिसिंग बाय दिस एडिटोरियल, ठीक है। चलिए, so since 2002, okay, India has acquired over $22 billion worth of US defense equipment, including Apache helicopter, okay, and Chincook helicopters, C-17 and C-130J transport aircraft, P-81 maritime patrol aircraft. This is just for your understanding, ठीक है। And M777 how's it is, while the US has become a major defense supplier, meaningful co-production and technology transfer remain elusive, यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इतने सारा हमने परचेस कर रहे हैं, इतना सारा हमने मार्केट दे रहे हैं, बट फिर भी वी आर नॉट गेटिंग द जेन्यून टेक्नोलॉजी। क्लियर? द कीज ऑफ GE engine, so General Electric F41 414, my bad, F414 fighter engine, once hailed as a centerpiece of bilateral defense cooperation, is merely the latest, ठीक है, and illustration of the gap between political declarations and industrial outcomes. So वहां पर stop हो गया, ठीक है। The estimated cost of each engine has reportedly nearly tripled. They were like asking for more money, ठीक है, rising from ground 70 crore to 80 crore to over 200 crore. पहले स्टार्टिंग हुआ था 70-80 करोड़ पे, लेकिन नेगोशिएशंस बढ़ते जा रहे थे अराउंड लाइक 200 करोड़, ठीक है। सो हैज आल्सो सॉट एन इंडियन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड $800 million टू एस्टैब्लिश अ डेडिकेटेड प्रोडक्ट लाइन। सो हमें यहाँ पर क्या करना है,
one thing we have to keep that in mind. Export में ज़्यादा like we have to get the exports, otherwise we will not be knowing about the other technologies as well. So वो भी रखना है, but self reliant भी होना चाहिए when it comes to the defense technology. So हमारी indigenous production also should be happening there. So this is also a major concern that you have to keep it in mind. ठीक है. So disagreements over technology transfer, intellectual property. यहाँ पर ये है कि if there is any technology that have been shared and after some point of time this intellectual property rights, okay, especially this appears in your GS3 paper, keep that in mind. ठीक है. patent rights, copyrights, that is called the intellectual property right. अगर कोई invention है वो मेरा है, ठीक है, I have to like it should be like it should be in my name, you cannot replicate it or you cannot be using it without any like permission. That is what the intellectual property right basically talking about. ठीक है. So यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वो रेस्ट्रिक्शंस के थ्रू दे वर ट्राइंग टू लाइक ये चीज है कि दे आर ट्राइंग टू stabilize the situation where India will be or any other country will not be exceeding US position. It should be like below the US position. So that is what the major core thing that they are trying to bring it from intellectual property. Okay, and export controls have further complicated negotiations. Okay, Hindustan Aeronautics Limited is negotiating procurement and licensed manufacture of the F414 for the Tejas Mech 2, while the Defense DRDO and Aeronautical Development Agency are separately engaging GE over the same engine for the proposed advanced medium combat aircraft and the Indian Navy's twin engine deck based fighter. The result is a web of interlinked negotiations providing difficult to resolve. ठीक है. सो यहाँ पर बहुत इजीली हमें नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है. मीनिंगफुल डिफेंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन कंटिन्यूज टू एलूड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया. सो जहाँ पर हमें we have to keep that in mind. Genuine technology sharing तो होना चाहिए. ठीक है. So flagship achievement of the initiative on critical and emerging technologies intend to symbolize a shift from a buyer-seller relationship towards genuine defense industrial collaboration, but instead it has become another illustration of the enduring gap between political ambition and industrial reality. So हम बोलते हैं ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं, but reality में वो हो नहीं रहा. ठीक है. So they have talked about डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव. ठीक है. कन्विंस टू प्रमोट को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन, बट एक्चुअली क्या हो गया था, नो सिग्निफिकेंट मिलिट्री कैपेबिलिटी बिफोर फेडिंग इनटू इररिलेवेंट. सो जहां पर इन रियल थियोरेटिकली सब कुछ है बट प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो रहा है. ठीक है. सो दैट इज व्हाट द मेजर थिंग. सो ICET, GE, the general engine that they have talked about, so whose unresolved negotiations have become emblematic of the wider difficulty in translating political ambition into industrial outcomes. So these are the examples where हम बोलते हैं मतलब negotiations तो करते हैं but reality में इसको लेके आने में it is taking lot of time. Index X also. So all these are things are talking about that. So the way forward would be like reduce the dependence upon the other countries, first thing. Second thing, go for the reliable and the genuine technology transfer countries, and along with that indigenously shridardi nahi lena hai to indigenously you have to create those what you have to create those technologies only. So these are the things that they have talked about it. ठीक है. So please do read about it. बाकी ज़्यादा इसमें तो कुछ है नहीं. ठीक है. The technology transfer divide, here they are talking about okay ट्रेड का वो टैरिफ्स है सब कुछ इन लोगों ने बता रहे हैं. ठीक है. बट जस्ट रीड अबाउट इट. That's it for the day. If you have any doubt, please let me know. Okay, otherwise we will wind up the session. चलिए. Okay, so that's it for the day. If you have any doubt, please let me know. Otherwise we will wind up the session. ठीक है. I hope everything is clear. I didn't get any comments regarding the doubts. चलिए. We will see in the next session. Till then, take care. Please do read your newspaper. एक बार skim through तो करना ही पड़ेगा. Okay. And इसके अलावा like certain things you have to
मार्केट, ओके, जो फैक्ट्स हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ, एक माइंड मैप के जैसे आप मार्क करते रहना, दैट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज इट, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। शानू टेलीग्राम चैनल, ये रहा, ये स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं, वी विल लुक इनटू इट, ठीक है शानू। चलिए, थैंक यू।